दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। नया लक्स, इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। अब आपको मिले चांद सा रोशन चेहरा। ये क्यों बुझाया? जब चांद यहाँ है तो रोशनी की क्या जरूरत। लक्स। ग्रैंड सिटी ने हमेशा अपने सारिफिन को बेहतर से बेहतरीन ही मुहैया किया है। तू हो दुनिया में चाहे जहां, तेरी फिक्र करे तेरे। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। ज़लज़ला प्रूफ टेक्नोलॉजी लिए HSJ स्टील, हमारा अज़्म मजबूत पाकिस्तान। Introducing Fruity and Sparkling, the real Fruity Spark. दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। Zong Weekly Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, 5000 Zong मिनट्स एंड SMS, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। डायल *794#। I am Generation Digital और आप Let's get digital with Zong 4G। नया लक्स, इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। अब आपको मिले चांद सा रोशन चेहरा। ये क्यों बुझाया? जब चांद यहाँ है तो रोशनी की क्या जरूरत। लक्स। Enjoy the good things in life. दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। ज़लज़ला प्रूफ टेक्नोलॉजी लिए HSJ स्टील, हमारा अज़्म मजबूत पाकिस्तान। सुबह सुबह गेट सेट गो, फिर होगा जो माइंड का टेस्ट। लगा के जोर दिया अपना बेस्ट, ब्रेक आने तक परफॉर्मेंस हुई लो, ब्रेक के बाद न जाने क्या। इसीलिए हर सुबह इन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क। ऑलपर्स दूध की भरपूर ग़िज़ाइयत, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और बादाम ज़ाफ़रान के मज़ेदार फ्लेवर्स में। ब्रेक के बाद भी गो गो गो, परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक ना हो। ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क जब ब्रेक में हो। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे, ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। तू हो दुनिया में चाहे जहां, तेरी फिक्र करे तेरे। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा।
दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे, ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। Do you wanna spend vacations in Dubai at Burj Khalifa? तो फिर परेशानी कैसी? ग्रैंड सिटी अपने सार्फिन के लिए नित नए इनिशिएटिव लेता रहता है और अब जल्द लेकर आ रहा है टॉलेस्ट बिल्डिंग टू योर सिटी इन बुर्ज ब्लॉक, सराय आलमगीर। ग्रैंड सिटी खारियां एक अप्रूव्ड और मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड रिहायशी मंसूबा है। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल। बुकिंग सिर्फ 2,75,000 से। ग्रैंड सिटी डेवलपिंग पाकिस्तान। Zong Wiki Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, 5000 Zong मिनट्स एंड SMS, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। डायल *794#। I am Generation Digital और आप Let's get digital with Zong 4G। It's a kind of magic। ब्रेक के बाद भी go 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 go, साइंस का काम भी always हो। परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक ना हो, और दूसरे बनने जब ब्रेक में हो। सहारा हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैलाब ज़दगान के लिए फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स की शदीद ज़रूरत है। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अकाउंट में फौरी तौर पे डोनेट करें, ताकि हम उनके डोर स्टेप्स पे जो हमारी टीमें काम कर रही हैं सामान उन तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। ग्रैंड सिटी ने हमेशा अपने सार्फिन को बेहतर से बेहतरीन ही मुहैया किया है। दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे, ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। अहम खबर आपको दें, बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। सीपीपीए ने दरखास्त दायर कर दी है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक, दरखास्त में क्या लिखा गया है? ये बिल्कुल महंगाई से सताई आवाम के लिए ये बुरी खबर सामने आई है
कि बिजली 4 रुपये 69 पैसे महंगी होने का इम्कान है। नेपरा इस पर जो है बाकायदा तौर पर कल समाअत करेगा। समाअत के दौरान जो है वो फिर मुख्तलिफ CPPA की दरख्वास्त है उसका जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ही हतमी फैसला होगा। इजाफा जो है जुलाई की माना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। इजाफे से सार्फिन पर का जो है वो अजाफी बोझ पड़ेगा। जी ठीक है मलिक सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिजली को एक बार फिर महंगा करने की खास दायर कर दी गई है। ये इजाफा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA ने यह दरख्वास्त दायर की है। 4 रुपये 69 पैसे बिजली महंगी करने की ये दरख्वास्त दायर की गई है। इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब से जायद का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। नेपरा अथॉरिटी कल इस केस की समाअत करेगी। और एडजस्टमेंट के हवाले से एक अच्छी खबर भी आपको दें। लाहौर हाई कोर्ट का बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट पर बड़ा फैसला। अदालत ने 200 यूनिट के बजाय तमाम सार्फिन को रिलीफ देने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने यह फैसला सुनाया। सार्फिन की दरख्वास्त चौधरी रिजवान एडवोकेट ने दायर की थी और अदालत की जानिब से फैसला आया कि सिर्फ 200 यूनिट वालों को जो ये सहूलतें ना दी जाए बल्कि रिलीफ तमाम लोगों को दिया जाए। 200 के बजाय तमाम सार्फिन को रिलीफ देने का हुक्म अदालत ने जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने फैसला सुनाया। सार्फिन की दरख्वास्त चौधरी रिजवान एडवोकेट ने दायर की थी, जिस पर यह बड़ा फैसला लाहौर हाईकोर्ट की जानिब में आ गया। पिंडी बेंच के जज ने यह फैसला सुनाया और फैसला ये सामने आया कि सिर्फ 200 यूनिट वालों को रिलीफ ना दिया जाए बल्कि तमाम सार्फिन को रिलीफ दिया जाए और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। 200 के बजाय तमाम सार्फिन को ही ये रिलीफ जारी किया जाए। फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आया। दरख्वास्त दायर की गई थी। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम चौधरी से। वसीम, फैसले की क्या तफसीलात हैं? वसीम चौधरी से भी जानेंगे। अदालत ने 200 यूनिट के बजाय तमाम सार्फिन को रिलीफ देने का हुक्म जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस की जानिब से फैसला सुनाया गया और इन तमाम लोगों को भी आप देख सकते हैं जो कि इस वक्त इस फैसले के बाद खुश हैं। वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा इस फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें सार्फिन को जो है वो रिलीफ फ्राहम किया गया है। 200 यूनिट तक रिलीफ के हवाले से जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो है दरखास्त दायर हुई थी जिसमें 200 यूनिट तक आम आदमी को सारफ को रिलीफ फ्राहम किया गया था। लेकिन आज रावलपिंडी हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला आया है जिसमें तमाम घरेलू सार्फिन को जो है वो रिलीफ दिया गया है। वसीम, ये क्लियर कर दीजिएगा, ये मुल्क के किन किन हिस्सों पर इस फैसले का इतलाक होगा? जी, इब्तदाई तौर पर जो है रावलपिंडी हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी अपडेट। इस वक्त एहसान इकबाल नून लीग के सीनियर रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की मानों में पाकिस्तान का नया चेहरा इस आबादी के ज़रिए, इस आबादकारी के ज़रिए, इस बहाली के ज़रिए उसमें रंग भर सकते हैं। हम इन कच्ची बस्तियों को पक्का कर सकते हैं। तो एक हमारे पास मौका है कि हम पाकिस्तान की तामीर नौ करें और पाकिस्तान से ये गुर्बत के जो धब्बे हैं, जो कच्चे मकान थे, इनको ख़त्म करने की भी कोशिश करें। साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो एक पाकिस्तान फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जारी था जिसने 2010 के सैलाब की रोशनी में एक 10 साला फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बनाया और इस फ्लड प्रोटेक्शन प्लान की मंजूरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मई 2017 में दी और 2018 से इस मंसूबे पे अमल किया जाना था। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। 5-5 साल के 2 मंसूबे बनाए गए। पहले 5 साल में 177 अरब रुपए से पाकिस्तान के दरिया, नाले, नदियाँ, फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स और ख़ास तौर पे जो नॉन स्ट्रक्चर इंटरवेंशंस हैं जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जिसमें मौसमियात के महकमे को बेहतर करना था, उसमें क्राइसिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बेहतर करना था। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जामे प्लान था जिसमें
वफाक ने सालाना तौर पे 17.5 अरब रुपए के करीब खर्च करने थे। गुज़श्ता 4 सालों में इस फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। अगर इस फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर अमल किया गया होता तो शायद आज इन सैलाब की तबाहकारियों से हम आधा बच सकते थे। हम बड़ी हद तक इंसानी जानों का नुकसान बचा सकते थे। हम बहुत हद तक अपनी ज़राअत का नुकसान बचा सकते थे। ये एक और सबूत है कि पिछले 4 साल पाकिस्तान की तबाही में कैसे गुजरे हैं कि जिस शोबे को आप हाथ डालें वहाँ पर 0/0 कारकर्दगी। एक सनद सिर्फ चली 4 सालों में, वो गालियाँ देना, झूठे पर्चे करना, लोगों को पकड़ना। और आप ये देखिए कि जब अब पाकिस्तान डूबा हुआ है, पाकिस्तान के 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेआसरा बैठे हैं, पाकिस्तान की मईशत पे 10 अरब डॉलर का इजाफी बोझ पड़ चुका है, तो उस मौके पे जब IMF का बोर्ड पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की मंजूरी दे रहा था जिससे हमें 1 अरब और 17 करोड़ डॉलर मिलने थे, PTI ने इमरान खान साहब की शय के ऊपर शौकत तरीन साहब ने जो शर्मनाक किरदार अदा किया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आप सोचिए कि ये लोग, इनकी ज़हनियत क्या है कि एक शख्स की अना की आग जो है वो बुझ नहीं पा रही। एक शख्स को अपने इक़्तिदार का इस कदर हवस है कि वो पूरे पाकिस्तान की मईशत को और 22 करोड़ अवाम को अपनी उस आग में झोंकना चाहता था। शौकत तरीन साहब ने, PTI ने वही हरकत की IMF प्रोग्राम पे जो भारत ने की। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, मां सवाए भारत के। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तामीर नौ करने का वक्त आ गया है। 2013 में हमारी हुकूमत में पाकिस्तान प्रोटेक्शन प्लान चल रहा था जिससे सैलाब की हिफाजत, सैलाब के नुकसान से बचा जा सकता था। इसकी मंजूरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने भी दी थी, लेकिन 2019 से 2022 तक इस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। अगर इस प्रोग्राम पर पैसे खर्च किए जाते, इसको बाकायदा चलाया जाता, तो सैलाब के नुकसान से बचा जा सकता था। अहम खबर अभी आपको सरगोदा के इलाके से, जहां मडरांजा में डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस चौकी के साथ ही ज्वेलर शॉप में दिन दहाड़े डकैती हुई। मुसल्लह डाकू ज्वेलर से लाखों का सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए। डाकुओं की सरेआम फायरिंग की वीडियो बोल न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। वीडियो में मुसल्लह डाकुओं को फायरिंग करते वाज़े देखा है। ताजिरों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। ये मनाजिर इस वक्त इस वारदात के आप देख रहे हैं। सरगोदा का इलाका मडरांजा, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया और बहुत ही आसानी के साथ डाकू ज्वेलर शॉप लूट कर फरार हो गए। सोना वहां से लूटा गया, नकदी वहां से लूटी और बाआसानी ये डाकू फरार हो गए। तमाम ताजिरों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया, टायर जलाए और सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पर ये इस तरह की वारदातें आम हो चुकी हैं और ताजिरों ने इसी सिलसिले में ये एहतजाज किया। दादू से आपको खबर दें, दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह और मेहड़ के गेट सैलाबी पानी पहुंच गया है। खैरपुर नाथन शाह का भी ज़मीनी राब्ता कोट अदू से मुनक़ता होने का खदशा है। सैलाबी पानी इंडस हाईवे कोलाची बैराज के मकाम ओवर टॉप करने लगा है। लाड़काना से कराची तक तमाम ट्रैफिक भी मुतासर होने का खदशा है। मनाजिर आप देख सकते हैं कैसे ये पानी इस वक्त यहाँ से बह रहा है। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह और मेहड़ के गिर्द ये सैलाबी पानी अब पहुँच चुका है। खैरपुर नाथन शाह का ज़मीनी राब्ता कोट अदू से मुनक़ता होने का खदशा है। सैलाबी पानी इंडस हाईवे कोलाची बैराज के मकाम पर ओवरटॉप करने लगा और लाड़काना से कराची तक तमाम ट्रैफिक भी इसकी वजह से मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। सैलाबी सूरत हाल खैरपुर की तहसील दादू नाथन शाह में इस वक्त है, जहां पर ये पानी अब पहुंच चुका है और बड़ी मिकदार में ये पानी पहुंचा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो सकती है। ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी मिक़दार में यहाँ पानी पहुँचा है। खैरपुर दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह है, जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर किस हद तक खौफनाक हैं।
अहम खबर आपको दें, कराची सेंट्रल जेल के बाहर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर हुल्लड़बाजी का वाकया, पीटीआई रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईस्ट जोन पुलिस की मुद्दत में मुकदमा न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल की गई। मुकदमे में राजा अजहर, फहीम खान और पीटीआई कारकुनान को शामिल किया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। हलीम आदिल शेख के मौके की जो शुएब बरनी इस वक्त हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ हम मौजूद हैं, उनसे इस वाक़े पर मजीद बात करते हैं। शुएब, बताइएगा कौन कौन सी दफात इस मुकदमे में शामिल की गई हैं? जी अरबाब, ये कराची के न्यू टाउन थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर है 366/2022। इसमें जो सेक्शंस लगाई गई हैं इनमें 353 है, 186 है, 146 है, 147 है और 149 है। ये सेक्शंस लगाई गई हैं इस एफआईआर के अंदर और ये नॉमिनेटेड एफआईआर काटी गई है, नामजद एफआईआर मुकदमे में दर्ज की गई है। ये मुकदमा जो है न्यू टाउन थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जो 6 सेक्शंस हैं वो लगाई गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल, इन्हें खींचो, मरोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। बता, सारी चॉकलेट किधर छुपाई है? चल बता। सारी चॉकलेट तो मेरे अंदर है बेबी। वॉल्स फीस्ट, चॉकलेटी सीम और लेयर्स भी थी। जल मत, पिघल जाएगा। हर सुबह इन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क। ऑलपर्स दूध की भरपूर ग़िज़ाइयत, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और बादाम ज़ाफ़रान के मजेदार फ्लेवर्स में। परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक ना हो, ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क जब ब्रेक में हो। कंस्ट्रक्शन की दुनिया का मजबूत और मुस्तहकम नाम HSJ स्टील, तामीर से तरक्की का सफर, आसमानों को छूने का अज़्म। HSJ स्टील, हमारा अज़्म, मजबूत पाकिस्तान। सायों से चेहरे आजाद हो गए, लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का, इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैलाब ज़दगान के लिए फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स की शदीद ज़रूरत है। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अकाउंट में फौरी तौर पे डोनेट करें ताकि हम उनके डोर स्टेप्स पे जो हमारी टीमें काम कर रही हैं सामान उन तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। कंस्ट्रक्शन की दुनिया का मजबूत और मुस्तहकम नाम HSJ स्टील, तामीर से तरक्की का सफर, आसमानों को छूने का अज़्म। HSJ स्टील, हमारा अज़्म, मजबूत पाकिस्तान। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्व-नुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। Zong Weekly Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, 5000 Zong मिनट्स एंड SMS, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। डायल *794#। I am Generation Digital और आप? Let's get digital with Zong 4G। सैलाब ज़दगान के लिए सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अकाउंट में फौरी तौर पे डोनेट करें ताकि हम उनके डोर स्टेप्स पे जो हमारी टीमें काम कर रही हैं सामान उन तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया।
Enjoy the good things in life. न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी स्मूथ हेयर, जिसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन जो दे 3 दिन तक फ्रिज कंट्रोल। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ। दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। कहीं महंगाई का जोर तो कहीं करप्शन का शोर। अब सिर्फ खबर का तज्जिया नहीं, उसके हल और उसकी तह तक जाना होगा। हर पहलू को सामने लाना होगा। मैं हूं जैस्मीन मंजूर। बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया। जैस्मीन मंजूर के साथ हफ्ता इतवार शाम 7 बजे। नहीं तो कूद जाऊंगा। जानती वो भी थी मेरी धमकियां झूठी हैं। ये उसकी ममता ही तो थी जो डर जाती थी। वो कहानियां सुनाती भी थी और बनाती भी थी। शेर आया, सारे जानवर भाग गए। शेर क्या खाते इतने पावर्स के लिए? पराठा। ये उसकी ममता ही तो थी जो मेरे लिए शेर को भी पराठा खिलाती थी। इम्तिहान मेरे होते थे, पर ये उसकी ममता ही तो थी जो रात भर जागती थी। आज भी कुछ भी तो नहीं बदला। आपको पता है स्पाइडरमैन इतनी पावर के लिए क्या खाता है? क्या? पास्ता। बस शेर की जगह स्पाइडरमैन ने ले ली और पराठे की जगह पास्ता ने। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। Do you wanna spend vacations in Dubai at Burj Khalifa? तो फिर परेशानी कैसी? ग्रैंड सिटी अपने सारेफीन के लिए नित नए इनिशिएटिव लेता रहता है और अब जल्द लेकर आ रहा है टॉलेस्ट बिल्डिंग टू योर सिटी इन बुर्ज ब्लॉक, सराय आलमगीर, ग्रैंड सिटी खारियां। एक अप्रूव्ड और मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड रिहायशी मंसूबा है। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल। बुकिंग सिर्फ 2,75,000 से। ग्रैंड सिटी डेवलपिंग पाकिस्तान। सैलाब ज़दगान के लिए सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अकाउंट में फौरी तौर पे डोनेट करें ताकि हम उनके डोर स्टेप्स पे जो हमारी टीमें काम कर रही हैं सामान उन तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। Experience the luxury of Fassel Sanitary, reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Fassel Sanitary for an elegant lifestyle. आर्मी चीफ स्वात पहुंच गए। जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासरा अफराद और सयाहों से मुलाकात करेंगे। ISPR के मुताबिक सयाहों और मकामी अफराद को कुमराट और कालाम से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन में खवातीन, बच्चे, गैर मुल्की और दीगर शामिल थे। अतियात देने पर अहले वतन खुसूसन समंदर पार पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ। इमरान खान का ट्वीट में इजहार तशक्कुर लिखा। 3 घंटे के टेलीथॉन में 5 अरब रुपए के अतियात के ऐलान किए गए। बलोचिस्तान में बारिशों से 200 अरब का नुकसान हुआ। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का इंकशाफ। कहा मुतासरीन की बहाली में 25 साल लगेंगे। हालिया सैलाब 2010 के सैलाब से 100 गुना ज्यादा तबाही लाया। नौशहरा सैलाब से मुतासिर हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला महमूद खान के दौरे पर बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा सैलाब ने बालाई इलाकों को ज्यादा मुतासिर किया। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत।
आवाम को बड़ा झटका देने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक की बिजली 14 रुपए 53 पैसे महंगी करने की दरखास्त। इजाफा अप्रैल ता जून की एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगा करने की CPPA की दरखास्त। इजाफा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सार्फिन पर 65 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा 31 अगस्त को समाप्त करेगा। नवाज शरीफ का हुक्म पार्टी रहनुमाओं ने नजरअंदाज कर दिया। लीगी कायद ने इमदादी कैंप लगाने की हिदायत की थी। लाहौर के चंद अरकान ने ही सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स लगाए। साद रफीक ने भी अपने हलके में कैंप नहीं लगाया। राशन है ना टेंट, कोई मदद नहीं की जा रही। सूबाई वजीर शबीर बाजारानी के हलके के रिहायशी फट पड़े। मुतासरीन ने दुहाई दी, हमारे घर गिर गए, कई फीट पानी जमा है। सैलाब से फसलों की तबाही, प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला। ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर मंगवाने की समरी तैयार। प्याज और टमाटर की दरामद पर लिविजो ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। 3 माह तक टमाटर और प्याज की किल्लत का सामना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं। तर्जुमान की वजाहत, कहा अदालत से मंसूब तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जाली हैं। FIA को मामले पर कार्रवाई का कह दिया। खुजदार में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, वैगन और पिकअप में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। हादसा कोयटा कराची कौमी शाहराह पर पेश आया। कनौज चिकन क्यूब बना है बेहतरीन मसालों और असली चिकन से, जो रोजाना के खानों को बनाए खास। कनौज चिकन क्यूब बना है बेहतरीन मसालों और असली चिकन से, जो रोजाना के खानों को बनाए खास और मजेदार। कनौज क्यूब, चिकन का असली मजा। मम्मा सिर्फ एक बाइट खाऊंगा, नहीं तो कूद जाऊंगा। जानती वो भी थी मेरी धमकियां झूठी हैं। ये उसकी ममता ही तो थी जो डर जाती थी। वो कहानियां सुनाती भी थी और बनाती भी थी। शेर आया, सारे जानवर भाग गए। शेर क्या खाते इतने पावर्स के लिए? पराठा। ये उसकी ममता ही तो थी जो मेरे लिए शेर को भी पराठा खिलाती थी। इम्तिहान मेरे होते थे, पर ये उसकी ममता ही तो थी जो रात भर जागती थी। आज भी कुछ भी तो नहीं बदला। आपको पता है स्पाइडरमैन इतनी पावर के लिए क्या खाता है? क्या? पास्ता। बस शेर की जगह स्पाइडरमैन ने ले ली और पराठे की जगह पास्ता। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। Zong Weekly Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, 5000 Zong मिनट्स एंड SMS, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। डायल *794#। I am Generation Digital और आप? Let's get digital with Zong 4G। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। आबी आफत, इंतजामी नाअहली और वादी मेहरान परेशान। एहसन इकबाल की इल्जाम तराशियां, सैलाब से होने वाली तबाही का मलबा गुज़श्ता हुकूमत पर डाल दिया। वजीर मनसूबाबंदी कहते हैं सैलाब से बचाव के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। शौकत तरीन पर भी उन्होंने उंगली उठाई है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किए, उनसे बात करेंगे मजीद। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। ये बताएगा कि इस तरह की जो आफात आती हैं, सैलाब हैं, लोग डूब जाते हैं, तो इसका मलबा भी मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमतों पर डाला है, क्या कहेंगे आप इस पर? एहसन इकबाल एक पढ़े लिखे वजीर होने के नाते इतनी नासमझ गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तरफ इनके वजीर आजम कहते हैं कि
इस इंसानी आफत का हमने मिलकर इस जो कहते हैं ना एक नेचुरल डिजास्टर का हमने मिलकर मुकाबला करना है, इंसानियत की खिदमत करनी है, इस पे सियासत ना की जाए। और फिर उनके अपने वुज़रा जो इस किस्म के बयानात देते हैं, ये सियासत कर रहे हैं, ये अवाम में अपनी साख हो चुके हैं, इनकी मकबूलियत जमीन बोस हो गई है और ये अब सियासत करना चाहते हैं अपनी नाकामियों से, महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए। अब बताइए कि पिछले 40 साल तकरीबन हुकूमत में रहे पीपल्स पार्टी और नून लीग बारियां बांटते रहे और 2 दफा इनकी कोलिशन गवर्नमेंट, आज भी कोलिशन गवर्नमेंट है और पहले भी कोलिशन गवर्नमेंट 2008 में कर चुकी। डैम्स बनाने में आपकी गफलत थी, आपने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने तो अमली इकदामात उठाए और हमारे इस पीरियड में, इस मुख्तसर पीरियड में 3 साल 3.5 साल के पीरियड में 10 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए ताकि वाटर की स्टोरेज में इजाफा किया जा सके और इस तबाहकारी से मुल्क को बचाया जा सके। क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल से दुनिया 2-4 है और पाकिस्तान भी उसकी जद में आता है, उसके लिए जितनी अवेयरनेस कैंपेन, जितनी सॉइल इरोजन के लिए ट्री प्लांटेशन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने करवाई है, ये सारी दुनिया जानती है। खुदारा सियासत बंद कीजिए और लोगों पर तवज्जो दीजिए। आज वफाक की हुकूमत आपके पास है, आज सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, पिछले 14 साल से हुकूमत में बैठी है पीपल्स पार्टी सिंध में, और आज जो सिंध की तबाहकारी है वो आप लोग देख रहे हैं। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है और बदकिस्मती से जो लोग जेन्युइनली अतियात दे रहे हैं उनकी भी बंदरबांट सियासी बुनियादों पे हो रही है। उसके बरक्स इमरान खान की क्रेडिबिलिटी देखे, वो 2.5 घंटे बैठते हैं टेलीथॉन पर और कौम का उन पर इतना एतमाद है अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क के अरब से ज्यादा लोग प्लेज कर देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को नहीं करते, हुकूमत सिंध को नहीं करते, वफाकी हुकूमत को नहीं करते, शहबाज शरीफ को नहीं करते, आसिफ अली जरदारी को नहीं करते, बिलावल को अहमियत नहीं देते। इमरान खान को वो 5 अरब के अतियात देते हैं 2.5 घंटे की टेलीथॉन में, और ये पैसा इंशाल्लाह जेन्युइन तरीके से फ्लड रिलीफ पे और मुतासरीन पर शफाफ तरीके से खर्च किया जाएगा। हमने उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है। हम सियासत पे नहीं पढ़ना चाहते, हम जेन्युइन इस मसले को हल करना चाहते हैं। एक खुदाई आफत आई है, हमने मिलकर बहसियत कौम के इसका मुकाबला करना है। आप एक तरफ सर्च वारंट दे देते हैं, दूसरी तरफ मुकदमों में जकड़ते रहते हैं और फिर कहते हैं एपीसी बुलाते हैं तो पीटीआई को दावत नहीं देते। ये तंग नजरी का मुजाहरा पूरी कौम देख रही है जो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के शहरियों का ताल्लुक है, हम उनकी पूरी मदद का इरादा रखते हैं। चाहे सूबा सिंध हो, चाहे बलोचिस्तान हो, वहाँ हमारी हुकूमतें नहीं है, लेकिन फिर भी जो खिदमत कर सकते हैं हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शामिउद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी दफ्तर ख़ारजा में इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। More than 1,100, including women and children, have lost their lives, and many more are injured. Livelihoods are severely impacted with the loss of livestock, not to mention crop losses, among other crucial sources of sustenance. Hundreds of thousands of women, children and men have been displaced and forced to spend days and nights in camps and open areas under a merciless sky. Lack of access to food, clean water, shelter, and basic healthcare is making life harder for them with each passing day. Critical infrastructure, roads, bridges, and railway networks have been seriously damaged and destroyed. This is impeding our efforts for delivery of aid and transportation of affectees to safer locations.
The situation is likely to deteriorate even further as heavy rains continue over areas already inundated by more than 2 months of storm and flooding. For us, this is no less than a national emergency. For the most vulnerable, especially the women and children impacted by this disaster, this is a life-defining experience. Excellencies, I've personally visited many of the flood-hit areas. Words cannot describe what it feels like to see people displaced from their own homes while mourning the loss of their loved ones. I've seen the pain, anguish, and suffering in their eyes, having literally lost everything they owned, now waiting for the next food pack, unsure about their futures. They are looking up to us for survival and to rebuild their lives and livelihoods. In addition to the human misery, these extraordinary floods have taken a severe toll on the economy and further stretch our limited resources. Excellencies, the government of Pakistan is cognizant of its responsibilities and has been leading the humanitarian response with invaluable support from the United Nations and humanitarian partners. As part of our national efforts, we've earmarked $173 million to help flood-affected people through direct cash transfers. This will be dispersed through the Benazir Income Support Program to 1.5 million families who will each receive 25,000 rupees in immediate cash relief. Rupees 5 billion has been allocated to the National Disaster Management Authorities for relief efforts. The government is also providing 1 million rupees in compensation for next of kin of the deceased, 250,000 rupees for injury and for partial damage of houses, 500,000 rupees for destroyed houses. In addition to financial support, food packs, shelter items including tents and water, sanitation and hygiene supplies are also being provided by the National Disaster Management Authorities and the Provincial Disaster Management Authorities. The government's efforts are being supported by the Pakistani nation, with people, civil society and humanitarian organizations stepping forward in a big way to complement the relief work with our characteristic generosity and philanthropic spirit. The Prime Minister's Relief Fund 2022 has also been established to facilitate people all over the country and to contribute to the flood relief efforts. Excellencies, but as it is evident, this disaster is colossal in its scale and devastation. It has severely strained, even overwhelmed, both our resources and our capacity. It has left millions vulnerable to health emergencies and a critical lack of basic survival needs. The gap between such needs and the capacity to deliver with speed and scale is crucial at this point. It requires urgent cooperation and support from the international community. We are profoundly grateful for the initial round of spontaneous solidarity and support from so many of our friends and partners around the world. I would like to acknowledge and thank all our friends for the prompt financial support and relief assistance being provided by several countries as well as the United Nations, World Bank and Asian Development Bank. We are especially grateful to the United Nations resident coordinator and his team for the excellent support that has been extended to us since the onset of this calamity. We need to expand and scale up these efforts and response. For that, we are launching the UN Flash Appeal for Pakistan Flood Response Plan 2022 today. The appeal prioritizes focused interventions in areas of education, food security, agriculture, health, nutrition, protection, shelter, and non-food items, water, sanitation, and hygiene. We also need assistance with livelihoods and livestock support, as well as relief, machinery, and equipment. We urgently need shelter and tents and mosquito nets, if they can be arranged and transported. This appeal is expected to address only part of the overall requirements and will therefore complement the broader effort. I would like to urge the international community to give its full backing to the Flash Appeal to help the people of Pakistan most in need.
I hope our partners would appreciate that given the urgent requirements of this catastrophe and the compounded burden on our economy, the humanitarian assistance being offered does not cut into the already committed development assistance. Beyond the immediate rescue and relief efforts, we would need support for rehabilitation and reconstruction of the flood-affected areas. I encourage you to contribute generously towards meeting the funding requirements of this response plan and going beyond. We believe that the efforts of the United Nations will be boosted by swift offers and announcements of support from your countries. Excellencies, the calamity we are facing is a clear manifestation of the direct and unmitigated consequences of climate change. As one of the smallest emitters on the planet, less than 1% of greenhouse gases. In fact, Pakistan is in the front line of the devastation caused by global warming. This mega flood has once again made us acutely aware of our vulnerability to recurring climate shocks. Such episodes are becoming all too frequent and increasingly more devastating. I hope you will agree that both the spirit of climate justice as well as humanitarian assistance, the international community needs to step up and share the burden with those most affected and impacted by rapidly changing climate and weather patterns. Your full support and solidarity with the people of Pakistan at this time would go a long way to alleviating their suffering and in helping to rebuild their lives, resilience, and communities. I thank you and look forward to working with all of you to build back better. Thank you. Thank you very much, sir. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि रवां साल होने वाली मानसून बारिशें गैर मामूली हैं। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़ा मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को साफ़ पानी और खाने की अशिया की क़िल्लत का सामना है। Flooding. The climate catastrophe has killed more than 1,000 people, with many more injured. Millions are homeless. Schools and health facilities have been destroyed. Livelihoods are shattered. Critical infrastructure wiped out, and people's hopes and dreams have washed away. Every province of the country has been affected. In my prior position as High Commissioner for Refugees, I witnessed the enormous giving spirit of the Pakistani people, welcoming and protecting millions of Afghan refugees, and in many cases, sharing their limited resources. It breaks my heart to see these generous people suffering so much. In response to the devastation, the government of Pakistan has released funds, including immediate cash relief. But the scale of needs is rising like the floodwaters, and it requires the world's collective and prioritized attention. The United Nations is issuing a flash appeal for $160 million to support the response led by the government of Pakistan. These funds will provide 5.2 million people with food, water, sanitation, emergency education, protection, and health support. Dear friends, South Asia is one of the world's global climate crisis hotspots. People living in these hotspots are 15 times more likely to die from climate impacts. As we continue to see more and more extreme weather events around the world, it is outrageous that climate action is being put on the back burner as global emissions of greenhouse gases are still rising, putting all of us, everywhere, in growing danger. The government of Pakistan has asked for the international community's help. Let us work together to respond quickly and collaboratively to this colossal crisis. Let us all step up in solidarity and support to the people of Pakistan in their hour of need. Let's stop sleepwalking towards the destruction of our planet by climate change. Today, it is Pakistan. Tomorrow, it could be your country. Thank you. I would now like to invite the Minister for Planning, Development and Special Initiatives, Mr. Ahsan Iqbal, for his remarks. He is the chairperson of the Relief Coordination Committee established by the Prime Minister of Pakistan in the wake of the recent devastating floods. Over to you, sir.
Honorable Foreign Minister, Minister of State for Foreign Affairs, Chairman NDMA, distinguished delegates, Excellencies, ladies and gentlemen. I would like to thank on my own behalf and on behalf of the people of Pakistan, the international community and the development partners for the concern and support they have always extended and for their involvement in assisting Pakistan during present times of need. Ladies and gentlemen, as we all know, Pakistan is currently facing the horrors of climate change with unprecedented, devastating flash floods and hill torrents, which have washed away roads, homes, and crops and communities, leaving a trail of deadly havoc across Pakistan. The damage is of unimaginable proportions. More than 1,100 people have died since the monsoon season began in June this year. Literally 1/3 of Pakistan is underwater, which has exceeded every boundary, every norm we have seen in the past. Initial estimates suggest that more than 33 million people have been affected by the historic flooding. Heavy waters in the country have swept away bridges and roads, schools and hospitals, railway tracks, critical telecommunication infrastructure, cutting off communities. Thousands of people living in the mountainous areas have been evacuated, but authorities are still struggling to reach those who are trapped. Those who managed to escape have been crowded into one of the many makeshift camps across the country. Almost half of the country's cotton crop has been washed away, and vegetable, fruit, and rice fields have sustained significant damage, posing serious challenges to the food security. There is growing concern about the looming cost of building back from this disaster, as the preliminary estimates are higher than $10 billion. The government is looking forward for assistance from aid agencies, friendly countries, and international donors. Ladies and gentlemen, the government of Pakistan's strategy for tackling the flood-affected areas is three-pronged: rescue and relief, rehabilitation, and reconstruction. The UN, due to its vast experience in emergency response, is leading the relief phase in consultation with NDMA and provincial governments. UN Humanitarian Coordinator has initiated the process of triggering a UN flash appeal, which we believe will go a long way in accelerating our effort to take care of the relief phase in shortest possible time. We are very grateful to the UN resident country coordinator who has extensively traveled through these areas and has extended full support in making this flash appeal possible in shortest time. For the rehabilitation and reconstruction phase, the World Bank is preparing to undertake a World Bank and Asian Development Bank are preparing to undertake a damage needs assessment study. This is a time-consuming exercise, and the results shall be shared with the donor community in due course of time. As said earlier, the magnitude of the crisis is increasing with the passage of time. Accordingly, the government of Pakistan would like to seek the support from the donor community, both for the ongoing relief efforts and for the rebuilding process. Pakistan looks forward to a positive and visible response from the international community in this regard. And may I also say that Pakistan has also initiated an initiative for building a resilient infrastructure to face the challenges of climate change at UN level platform. And we do hope that international community will realize that this is, as the Secretary General said, that this is Pakistan today, it can be any other country tomorrow. We all have to join hands in order to fight the effects of climate change and make world a safer place for everyone living on this planet. Thank you very much. I thank you, sir.
I now invite the UN Resident and Humanitarian Coordinator in Pakistan, Mr. Julian Harnais, to please share his views with us. Thank you. Foreign Minister, Minister Planning, Madam Minister, Chairman NDMA, Ministers, Chief Minister, Ambassadors, friends. Like many of you, Foreign Minister, Chief Minister of Sindh, Chairman, I spent the last week in the districts of Pakistan, Balochistan and Sindh. The scale of the catastrophe is beyond my comprehension. We were going through kilometre after kilometre through central Sindh, where all you could see was villages on the move. I literally saw tens of thousands of people just packing up what little they have, throwing it into trucks or just parking it by the side of the road, and trying to find a dry place to put their village. Piles of charpoys, mattresses in the rain. Thousands of people, parents, children, just looking around and going, what happens now? How am I going to protect my child from getting sick? What am I going to eat? Where am I find water? Where will I sleep tonight? And this all across Sindh and much of Balochistan. And their hands were stretched out, asking for help, our help, your help. Now's our time. This is all the result of climate change. Now, climate change is a polite way of saying the unwanted consequence of the industrialization of our planet. This is an internationally driven problem, and therefore it is only right that part of the solution comes from us. I also saw good things. I saw the government out there. I saw deputy commissioners pulling together their people across the country. Ministers out in their constituencies doing everything they could to bring together their people. The first distributions of bits, people receiving their little messages saying that come in for the assistance. These are all good things. Most touchingly of all was the generosity of the people of Pakistan at all levels. Be it rich, poor, they were all reaching into their pocket, giving out to those of their fellow citizens who needed most, and we need to do the same. So now's the time for the international community to step up next to the people of Pakistan. Climate change-driven catastrophe demands international solidarity. The United Agencies funds and programs, we started responding, so have the non-governmental organizations, both national and international, but we are limited by the financial resources available to us. This flash appeal will help to correct that. The flash appeal will build upon solid foundations. Since the last superfloods of 2010, which were not of the scale of this one, the government, with your support, has built strong foundations. The Benazir Income Support Programme, at a press of a button, can distribute money to tens of thousands, hundreds of thousands of people. That didn't exist back then. We've strengthened National Disaster Management Aid Authority and the PDMAs and the DDMAs across the country. There's a network of humanitarian response facilities that can be used to build a strong response. That didn't exist in 2010. So we're building upon strong foundations. Our international humanitarian appeal for the United Nations and non-governmental organizations will build upon that strong foundation. We will contribute to the work of the government, and our assistance will be under the guidance and the cooperation of the National Disaster Management Authority and the Provincial Disaster Management Authorities. I'm very grateful to the assistance of member states and even private citizens in developed countries who've given for this response. Thank you. I'm asking you to do more because it's the right thing. Thank you very much, Mr. Harnais. I now request the Chairman of the National Disaster Management Authority, NDMA, Lieutenant General Akhtar Nawaz, to give us an overview of the flood situation in the country. Please, sir. Honorable Foreign Minister, Excellencies,
ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. The presentation that I'm going to make is based on a PowerPoint. It's more technical in nature to make you understand the impact, the losses, and what are, the needs. I would draw your attention to the very first page of the presentation, which actually sets stay on to previous one, yeah, which actually talks about change and ultimately its outcome. Next, please. Yeah, if you look at this slide, we lost this spring this year, 2022. We moved directly from winter to the summers. That was followed by 4 heat waves, and where we faced forest fires, and our large tracts of the forest remained on fire for weeks. Yeah. We were followed with the drought warnings, and this is exactly where the United Nations community here in Pakistan, along with NDMA and all other stakeholders, started talking about and worrying about what is going to come as an outcome of this drought. But then came, what we faced, the early and unprecedented monsoon with very horrific consequences. Next, please. Yeah. What we had thought about, our meteorological department, they thought that this time, based on their assessment and studies, the monsoon rains are going to be slightly above normal. And once they said slightly above normal, it meant 25 to 30% above normal. Next, please. Based on, this assessment, through the effort with our all stakeholders, that is the provincial disaster management authorities, the federal agencies, the UN offices and systems here, the humanitarian organizations, we carved out a contingency plan for the monsoon 2022 and issued this plan on 12th of May. This was immediately followed by an exercise, simulation exercise, jointly conducted by United Nations and the National Disaster Management Authority, where all the stakeholders relevant to the disaster management participated overwhelmingly. Next, please. Coming on to what happened after having gone through, the estimates that we had forecasted. Contrarily, this is what we got. Overall, in Pakistan, 186% more rainfall compared to 30 years normal average. The Sindh got the highest, 466%, followed by the Balochistan. Even all other provinces and regions are also above the normal average of 30 years. Next, please. This is a very instructive slide, and I would like to explain it in a bit more detail. Our traditional monsoon areas lie in the north of the country. These are into the Azad Jammu and Kashmir, northern and central parts of Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, eastern portions of Balochistan, and the northern parts of Sindh. This time, instead of going to the traditional areas, the monsoon actually first hit us in the first 2 spells into the province of Balochistan and South Khyber Pakhtunkhwa, including the 2 districts of Diyai Khan and Tank, followed by a massive, build-up of the rain in the next 3 spells into Sindh, and then moving up north, the last spell towards northern part, including, Azad Kashmir, KP, northern Punjab, and Gilgit-Baltistan. If you look at, this slide, this explains how much the rainwater has come down from the skies directly into various areas, coupled with the flash floods, hill torrents, leading to urban flooding. This is something we had never thought of and we had never experienced, and that is where, the challenge lies. Next, please. Yeah. As an outcome of all this rainfall and what we got as an outcome of the climate change, today 72 of our districts, 221 of our tehsils, and
6,597 of the union councils have been formally declared as the calamity hit by the provincial governments. And the number is likely to increase as we speak because the calamity continues. Next. I will just draw your attention to these couple of slides from the SUPACO, our satellite producing agency. If you look at the left cut, it is of 11th of August. And if you look at it over here, it is of 23rd of August. Draw the comparison how this was on 11th and how this is. This all indicates the total inundation. Next, please. If you look at the second one, this is where the river Indus moves, and this is the Larkana. The complete district has been inundated. Next. If we talk of the numbers, more than 2 million acres of the agricultural land, 33 million population, 5,127 people rescued, and the persons in the camps are near 500,000. Next, please. The brunt, the casualties in terms of the deaths as well as in terms of injuries, the figure has crossed 1,100 in case of deaths and 1,600 in case of injuries. The brunt has been borne by the vulnerable, that is the women, children, and the elderly. This is likely to increase due to massive inundation, where the houses are coming down and people are still facing the challenges to the survival and life. Next, please. If you look at this slide, this speaks of, the infrastructural damages and also the loss of livestock. The most critical out of these are the bridges on our critical arteries and roads, the damages to the houses in a very, very large number, and this is unfortunately likely to increase. And also the loss, massive loss of the livestock. Next, please. Once we speak, our two major water retaining structures, that is the Tarbela Dam and Mangla Dam. The Tarbela Dam has gone to its full capacity, whereas Mangla Dam, which used to be filled by this time, is still vacant by around 53%. And the reason is that its catchment areas, traditional monsoon areas, didn't receive the rainfall. Next, please. As we speak, this is what is the condition of our various rivers running down from north to the south. We are still having, high floods, medium floods in certain, and a very high flood at Nowshera. But however, the situation is not very, it's under control. There is nothing to worry much at the moment. We are grappling with this situation that is being faced here. Next, please. I'll just, show you some of the videos, very selected one, to just highlight how difficult and, tough it was. Can we have the video? This is from the lower deal, and you will see how our communication infrastructure is being washed away. This one from Khyber Pakhtunkhwa in Shanghai. Next, please. This one is again, one of the earthworks that got washed away. Next one, you will see how the infrastructure, the buildings have been washed away. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Can we go to this one? This is Azad Jammu and Kashmir. And the Balochistan
in the Bolan area. This one in the Lasbela near Karachi, a part of the Tonsa Barrage in Islamabad, Punjab area. Next, please. If you look at this, the complex of the houses, this is how thousands of houses and complexes are inundated in the province of Sindh as well as in Balochistan. If you look at this is the Lasbela, how the people are finding the safety wading through the gushing water. This is where the people are being helped out to the safety. Next. As we speak, the people are being taken out from the inundated areas. This is what was in the Karachi area. Look at the people really stranded in the mid of these running streams. Next. This is what is the condition as we pull them out, put them to some kind of temporary shelters. If you look at the infrastructure, the massive damage to the critical infrastructure all across the country. This is where the vulnerable group that I was talking about stays. Next. This is a very critical the infrastructure that we are losing, and this is the extent of the damage. It will take a lot of time and massive finances to rebuild. Next, please. Coming on to the response by the federal government, the provincial governments, rescue relief by civil administration, disaster management authorities, duly supported by the armed forces, even the civil society, the humanitarian organization continues as we speak. A committee has been established at the federal level, which is headed by Mr. Hassan Iqbal, the chairman of the committee. He's the Minister for Planning and Development. There are a couple of other ministers who are guiding and coordinating the rescue and relief effort. The emergency has been declared at the national level. Army has been requisitioned to carry out, the relief and rescue operations in support of the disaster management agencies. There has been an enhancement of the compensation package. I will not go into the detail. That has already been partly covered. Next. Benazir Income Support Program, one of the best social protection program, is already rolling out at a very fast speed into all provinces. NDMA carried out a rapid need assessment and shared this one with our Ministry of EAD so as to share it with the donors, and that has already been done, and they are working fast pace on it. There was a donor conference, a number of them actually, in the Ministry of EAD as well as headed by the Prime Minister. A giant survey by the provincial disaster management authorities, duly supported and assisted by NDMA and the Army, has already taken off in the province of Balochistan, and it will go. Chairman NDMA Lieutenant General Akhtar Nawaz इस वक्त ब्रीफिंग कर रहे हैं. बुलेटिन से फिलहाल इतना ही. कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ. किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज. दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है. इसे जल्दी रोकें. पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों के बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है. पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं. पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स. क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया. बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल. इन्हें खींचो, मरोड़ो, तंग करो. इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं. तुम भी तो मजबूत हो ना. एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत. लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत. लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो. आजकल गली गली में हीरो उस्ताद के ही चर्चे हैं. साहब जी ऐसे ही नहीं, जिंदगियां बदली हैं जी मैंने. जैसे कि अपने जैन भाई, जब बाइक इतना पेट्रोल खाएगी तो बीवी की आउटिंग तो फिर. अपनी बाइक को ही खिलाते रहो, मेरी खैर है. उस्ताद सब कुछ ट्राई कर बैठा हूँ, अब तो मेरी जिंदगी भी हीट अप हो गई है. हाइपर ट्राई किया?
हाई पर्फ से मिले बेहतर माइलेज और हाई परफॉर्मेंस, जिससे चले इंजन लंबे अरसे तक। वाह उस्ताद, तुम तो वाकई हीरो निकले। हाई पर्फ, उस्तादों का असल हीरो। ग्रैंड सिटी ने हमेशा अपने सारिफिन को बेहतर से बेहतरीन ही मुहैया किया है। Zong Weekly Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, 5000 Zong मिनट्स इन SMS, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। डायल *794#। I am Generation Digital और आप Let's get digital with Zong 4G। कंस्ट्रक्शन की दुनिया का मजबूत और मुस्तहकम नाम HSJ स्टील, तामीर से तरक्की का सफर, आसमानों को छूने का अज़्म। HSJ स्टील, हमारा अज़्म, मजबूत पाकिस्तान। It's the kind of magic. Magic. हानिया, ये लीव एप्लीकेशन ना भूलना। हाँ, 5 दिन की बीमारी के बाद आ जाइए। पहले अरहम भी बहुत बीमार रहता था, मगर अपना बीमार रहते हैं ना अटेंडेंस और पढ़ाई में हर्ष आता है। वो कैसे? हम रोज डेटॉल सोप से नहाते हैं। ज्यादा बीमारियों के बायस अक्सर बच्चे स्कूल में एब्सेंट रहते हैं। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। Introducing Fruity and Sparkling, the real fruity spark. Melting together in rivers of vanilla under chocolate skies. A sweet little journey with you by my side. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैलाब ज़दगान के लिए फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स की शदीद ज़रूरत है। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अकाउंट में फौरी तौर पे डोनेट करें ताकि हम उनके डोर स्टेप्स पे जो हमारी टीमें काम कर रही हैं सामान उन तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। ज़लज़ला प्रूफ टेक्नोलॉजी लिए HSJ स्टील, हमारा अज़्म, मजबूत पाकिस्तान। It's the kind of magic. Magic. स्कूल्स का वापस खुलना अपने साथ लाता है बीमारियों का खतरा। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। Enjoy the good things in life. पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Zong Weekly Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, 5000 Zong मिनट्स इन SMS, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। डायल *794#। I am Generation Digital और आप Let's get digital with Zong 4G। आजकल गली गली में हीरो उस्ताद के ही चर्चे हैं। साहब जी ऐसे ही नहीं, जिंदगियां बदली हैं जी मैंने। जैसे कि अपने जैन भाई, उनका बेटा उनके साथ स्कूल जाने को तैयार नहीं था। बाइक आपकी गर्म होके बंद होती है, टीचर्स मेरे पे गर्म होते हैं। आज सब कुछ ट्राई कर बैठा हूँ, अब तो मेरी जिंदगी भी हीट अप हो गई है। हाई पर्फ ट्राई किया? हाई पर्फ से मिले बेहतर माइलेज और हाई परफॉर्मेंस, जिससे चले इंजन लंबे अरसे तक। वाह उस्ताद, तुम तो वाकई हीरो निकले। हाई पर्फ, उस्तादों का असल हीरो। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। तू हो दुनिया में चाहे जहां, तेरी फिक्र करे तेरी माँ। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन,
और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। Melting together in rivers of vanilla under chocolate skies, a sweet little journey with you by my side. ग्रैंड सिटी ने हमेशा अपने सारिफिन को बेहतर से बेहतरीन ही मुहैया किया है। कंस्ट्रक्शन की दुनिया का मजबूत और मुस्तहकम नाम HSJ स्टील, तामीर से तरक्की का सफर, आसमानों को छूने का अज़्म। HSJ स्टील, हमारा अज़्म, मजबूत पाकिस्तान। स्कूल्स का वापस खुलना अपने साथ लाता है बीमारियों का खतरा। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। नहाने के लिए स्किन वाइट गोट मिल्क सोप और चेहरे के लिए स्किन वाइट गोट मिल्क क्रीम। वाह, क्या खूबसूरत जोड़ी है। Experience the luxury of Facile Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. Enjoy the good things in life. आए, दें हमारा साथ, हर बच्चा चैन से सोएगा, बीमारी से दूर रहेगा। मोर्टीन LED के साथ हम रखें इन्हें बिल्कुल महफूज। डेंगू के खिलाफ मदद की नंबर 1 चॉइस मोर्टीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैलाब ज़दगान के लिए फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स की शदीद ज़रूरत है। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अकाउंट में फौरी तौर पे डोनेट करें ताकि हम उनके डोर स्टेप्स पे जो हमारी टीमें काम कर रही हैं सामान उन तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। ज़लज़ला प्रूफ टेक्नोलॉजी लिए HSJ स्टील, हमारा अज़्म, मजबूत पाकिस्तान। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Zombie Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, 5000 Zong मिनट्स एंड SMS, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। डायल *794#। I am Generation Digital और आप Let's get digital with Zong 4G। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मरोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। सैलाब ज़दगान के लिए सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अकाउंट में फौरी तौर पे डोनेट करें ताकि हम उनके डोर स्टेप्स पे जो हमारी टीमें काम कर रही हैं सामान उन तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। Do you wanna spend vacations in Dubai at Burj Khalifa? तो फिर परेशानी कैसी? ग्रैंड सिटी अपने सारिफिन के लिए नित नए इनिशिएटिव लेता रहता है और अब जल्द लेकर आ रहा है टॉलेस्ट बिल्डिंग टू योर सिटी इन बुर्ज ब्लॉक, सराय आलमगीर, ग्रैंड सिटी खारियां। एक अप्रूव्ड और मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड रिहायशी मंसूबा है। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल। बुकिंग सिर्फ 2,75,000 से। ग्रैंड सिटी, डेवलपिंग पाकिस्तान। आए, दें हमारा साथ और ठान लें, इलाज से बेहतर रहेगी मुकम्मल एहतियात। और घर बैठे मुकम्मल हिफाजत के लिए हमारा मशवरा मोर्टीन स्प्रे। डेंगू के खिलाफ डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस मोर्टीन।
स्कूल्स का वापस खुलना अपने साथ लाता है बीमारियों का खतरा। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। ग्रैंड सिटी खारियां सबसे आगे रहा है और अब जल्द लेकर आ रहा है टॉलेस्ट बिल्डिंग टू योर सिटी इन बुर्ज ब्लॉक, सराय आलमगीर, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। बुकिंग सिर्फ 2,75,000 से। केशिया रावने मोरिंगा, इसकी खास रूट बॉटल से तेल का एक एक खतरा बालों की जड़ों तक जाए और स्कैल्प को नरिशमेंट पहुंचाए, हेयर फॉल रोके, ग्रोथ बढ़ाए, रिजल्ट में वाजे फर्क नजर आए। केशिया अब कतरा कतरा जड़ों तक। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी स्मूथ हेयर, जिसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन जो दे 3 दिन तक फ्रिज कंट्रोल। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ। दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। सैलाब ज़दगान के लिए सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अकाउंट में फौरी तौर पे डोनेट करें ताकि हम उनके डोर स्टेप से जो हमारी टीमें काम कर रही हैं सामान उन तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। Experience the luxury of Facile Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. Do you wanna spend vacations in Dubai at Burj Khalifa? तो फिर परेशानी कैसी? ग्रैंड सिटी अपने सारेफीन के लिए नित नए इनिशिएटिव लेता रहता है और अब जल्द लेकर आ रहा है टॉलेस्ट बिल्डिंग टू योर सिटी इन बुर्ज ब्लॉक, सराय आलमगीर, ग्रैंड सिटी खारियां। एक अप्रूव्ड और मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड रिहायशी मंसूबा है। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल। बुकिंग सिर्फ 2,75,000 से। ग्रैंड सिटी डेवलपिंग पाकिस्तान। स्टिलमेंस कलर प्लस अब मुख्तलिफ शेड्स में, जिसमें है कोलेजन प्रोटीन, कोकोनट ऑयल और आंवला ऑयल, जो आपके बालों को रखे शाइनी और मजबूत। स्टिलमेंस कलर प्लस क्रीम हेयर कलर। Pakistan is awash in suffering. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. The climate catastrophe has killed more than 1,000 people, with many more injured. Millions are homeless. Schools and health facilities have been destroyed. पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। अक़वाम मुत्तहिदा मुश्किल वक्त में इमदाद फराहम करेगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ऐलान। कहा सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी फंड्स की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील की है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को शदीद बारिशों और सैलाब का सामना है। रवा साल मुल्क में हीट वेव ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिलावल भुट्टो का वजारत खारजा में खिताब। कहा सैलाब से जो तबाही हुई मुनाकाबिले बयान है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज बोले 72 अजला को